रिवाइज और इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको अगर मेरी लाइक दिस वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मेरे जीरो गाइस डेली ब्लॉग मिलता रहेगा। तो अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड अगर आप भी लाइक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो गाइस आप लोग सपोर्ट बनाए किए एंड लाइक कर दीजिए। सो लेट्स गो, अभी हम लोग क्रिएट करते हैं कुछ नोट्स एंड जो अपने इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जस्ट वॉइस सेटअप मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टडी। एंड इसको जस्ट मैं करता हूँ इधर एंड इसको जस्ट मैं करता हूँ इधर। इधर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा मैं सेटअप कर लूँगा फ़ोन लैपटॉप को, बिकॉज क्या होता है कि लैपटॉप एंड प्लीज़ मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक कर चुके होंगे एंड सब्सक्राइब कर लो यार आप लोग। सो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं एंड गाइस अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी, क्या बोलते हैं इसको यार, इसको जस्ट करते हैं हम लोग कंप्लीटेड। गाइस वेलकम बैक माय लाइव स्ट्रीमिंग एंड गाइस अभी हम थोड़ा अपना क्या है कि जो नोट्स हैं उनको ओपन कर लें एंड अभी हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उसको मैं जस्ट थोड़ा लाइक चैट जीपीटी से थोड़ी हेल्प ले लूँ एंड कुछ नोट्स अपने ओपन कर लूँ, फिर हम लोग करते हैं रिवाइज अपने यूनिट सेकेंड की। जस्ट वेट गाइस, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टडी। देन हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम पढ़ेंगे लाइक
uninformed search strategies. Like uninformed search strategies are method for the finding the solutions in the search page space without using any extra information about the problem. Goals has information about the two things, like what is the start state and what is the goal state. So, more times consumers they are uh, uninformed because they don't know in the path of better than others until they have actually explored it. BFS got the breadth first search, and breadth first search is the way of finding the path. Search is way for computers in the to exploring the path, graph or tree to find the solutions. It's just to check all the possibilities step by step. इसमें क्या होता है कि इसमें हम करते हैं FIFO, using FIFO like BFS. इसमें हम करते हैं FIFO and using the graph and like A B C, like इसमें ये होते हैं स्टेज, इसमें D and E and F and G. This is the क्या बोलते हैं टेंजेंट and cost optimal. Because always find the shortest path when all moves cost are same. So how is the BFS works? मतलब start at the root node, start करते हैं root से, then visit all direct neighbors first करता है, then move the nearest level of the neighbors and keep repeating until you find the goal. You have check all the possibilities. Like इसमें हम लोग पहले गए यहाँ से हम लोग गए ए में, लोग जाएंगे ए से क्या है BC है तो BC में जाएंगे, बी से मैंने काट दिया तो यहाँ से हम जाएंगे लाइक बी से कितने में गए थे सी और डी में, बी से हम गए थे बी से क्या इनने कर दिया है सी बचा और डी और ई बचा, ठीक है। फिर डी, फिर मैंने सी काट दिया तो डी से सी से हम कहाँ गए थे, सी से गए एफ और जी में, तो डी और ई एंड एफ एंड जी। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो यहाँ से इनका डी वाला सिस्टम में डी को काट लेंगे तो डी से काट लेंगे तो आ जाएंगे हम ई और एफ और जी में हैं, एंड यहाँ से मैंने ई को काट दिया तो हम एफ और जी में, एंड यहाँ से जी अपना आ गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग लाइक शॉर्टेस्ट पर जी है डेप्थ फर्स्ट सर्च लाइक डी एफ एस, व्हाट इज यूज टू स्टैक लीफो, जो अपना डी एफ एस होता है डी एफ एस, ये करता है लीफो को, वो करता है फीफो को। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसमें होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लाइक डीएफएस एक्सप्लोर करता है डीपली एज द पॉसिबल डाउन ऑन पाथ बिफोर बैक ट्रैकिंग एंड एक्सप्लोरिंग अदर्स पाथ। इट्स फॉलो करता है द ब्रेथ ऑफ द प्रॉब्लम्स until it reach the end or the depth and path। देखो डीएफएस लाइक इट्स स्टैक को यूज करता है डीएफएस, इट्स लीफो डीएफएस एक्सप्लोर करता है डीपली एज अ पॉसिबल डाउन वन पाथ बिफोर द बैक ट्रैकिंग एंड एक्सप्लोरिंग अदर्स पाथ। इट्स फॉलो on the branch of problems until the reasons and the end or the dead end, then the backtracks and countless from the others branches। artwork do start from the initial state like root node है, goes the deep as a possible into the branch follow on me है। if you hit a dead end or reach if solutions backtracks to the last decisions point and explore other options, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इनका सीन होता है, इसमें हम करते हैं कुछ समथिंग ऐसे कि यहाँ पे लिखा है ई फिर बी सी एंड डी ई, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर गए स्टैक बनाया मैंने,
इसमें डाला ए को, एक छोड़ा, ठीक है। फिर मैंने स्टेप बनाया, यहाँ डाला मैंने सी को एंड यहाँ पे बी को, ठीक है। फिर मैंने स्टैक बनाया, यहाँ पर डी ई एंड सी। फिर यहाँ से मैंने स्टैक, यहाँ पर मैंने डाला ई को एंड सी को। जब मैंने ए है, ए से बी, ए से हम लोग गए बी से में, ठीक है। फिर हमने को बी को काटा ना, बी को काटा, तो बी से हम गए डी और ई में, अपना सी में। फिर हमने सी को नहीं काटा, फिर मैंने काटा ई को। फिर डी को काटा, तो डी से हम किस में गए, डी से गए ई में, ई को फिर मैंने ई को काटा, ई से मैं किस में नहीं जाऊँगा, किसी में नहीं जाऊँगा, ई से जाऊँगा मैं सी में। तो यहाँ पे मैं सी में, जब मैं सी को काट रहा हूँ तो हम लोग जाएंगे जाएंगे एफ और जी में, एंड फिर मैं काट दूंगा सीधे एफ को। जब मैंने एफ काटा मैं पहुंच गया सीधे जी में। तो ये अपना हो गया शॉर्टेस्ट पर, लाइक गोल स्टेट फाउंड, गोल फाउंडेड, ठीक है। इंटरेक्टिव डीप सर्च, लाइक इसमें उसे बोलते हैं आईटीएस, इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव आइटरेटिव डीपिंग सर्च, इसे बोलते हैं आईडीएस। Like ideas like is the search strategies in AI that's combine करती the best features of DLS like and DFS. It's the methods that avoid the problem of both DLS and DFS. Uh, Iterative deepings is the like doing a series of the DFS with the increasing depth limits first. It is the searches at the depth first, and then at the depth 2, at the depth 3, and so on. And it's keep going deeper, but each times it's restarts and the search from the beginnings with the deeper limitation. How it works, like start with the deep. First is to perform a deepest search, but it's the only goes as a deep as levels 1. This means it will be explore the first level of the nodes and check if it has found the solutions. Increase the depth limits. If the solutions isn't found, the algo increase the depth limits to meanings. It will be explore करता है all nodes up to 2 levels deep से, repeat with the increased depth, then it's perform the DFS again, but this times is the will be go deeper to level 3 and then level 4 and so on, ठीक है। Continue until solutions it's found this process depth repeat करता, process repeat होता रहता है until the solutions it's is explore is founded and it's explore deeper and deeper levels, but always starting fresh from the initial से। और एग्जाम्पल्स में क्या हो गया, ये इसका होता है एग्जाम्पल, वही होगा ना। हम लोग इस गए तो ऐसे ना जाएंगे तो जी मिला सुना ना, देन हम लोग करेंगे इन्फॉर्म्ड सर्च, IS. Informed search like strategies are the methods used in AI to find the solutions more efficiently, using the additional informations about the problem to make the smarter and choice the during the searches, and greedy best search, GBFS. Hmm. The search strategies aim to find the goal as quickly as possible by exploring the paths that seems closest to the goal based on in the heuristics fun. How it's work, start from the initially nodes, the search begin at the starting point. Let's say evaluate करता path using the heuristics functions. The algorithm check करता possible path from
from the starting points. Each possible pass to others nodes has a heuristic value, which is the numbers that estimate how close you are the our goals. The lower the no, the closer we are choosing path. AI each at each step we look at all the possible paths and choose the one with the smartest heuristic values. Repeat करते हैं हम लोग, repeat the process. We continue in this process, moving along the choose paths and until we reach the goal. Mm, we start with ये तो बड़ा heuristic एडवांटेज क्या होता है, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट होता है, फास्ट, इट्स क्विक because it is the focuses on the most promising path है, low memory use तो करता है, disadvantage का not always the best solutions need a heuristics, it's require a goal heuristics which add some complexity. Like a star search क्या होता है, a stars is the smart way to find the shortest path from the starting point to goal points. It's the like a more advanced versions of greedy BFS. How does it works, start at the beginning, start देखो ए स्टार स्टार्ट करता है एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स, एवेल्युएट करता है, एवेल्युएट द ईच ऑप्शन, evaluate the each option, the cost of reach this point called this point called GN. Hmm. This estimated cost to the goal called NN. A star at these two values together, Fn is equal to Gn plus N Hn. Choose the best option. The A star always choose the path that has the lowest Fn values, meaning it's the path that sees the to be the shortest overall. Hmm. Keep going until we reach the goal. uh, we reach the goals. Actual cost from start nodes to n, fn is equal to, देखो ये सूत्र था थोड़ा टफ, fn is equal to gn plus hn. तो ये होती है अपनी एक्चुअल कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट स्टार्ट नोड, ये होती है स्टार्ट नोड, एंड ये होती है एस्टिमेट कॉस्ट, एस्टिमेट कॉस्ट है। अब इसमें मैंने आप लिखा है, मुझे जाना कहाँ पे है, फाइंड स्टार्ट लिखा होगा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कीजिए। सो जस्ट वेट, अभी मैं थोड़ा सा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे तो आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और होमवर्क यार फिलहाल मैं अभी होमवर्क नहीं कर रहा हूँ यार, सॉरी, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ यार। जस्ट आई विल शो यू। पढ़ लो यार युवराज, अगर पढ़ पाओ तो, अगर पढ़ना जानते हो तो। आई डोंट नो हाउ टू लाइक हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
होमवर्क एंड इसमें बहुत अंतर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप एंड इसमें हम कर ही कह सकते हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे लाइक 5 से गया, 5 से गया मैं ऐसे एस बी एफ जी सी ई एंड डी ई से यहाँ से 14, यहाँ से 4, यहाँ से 12, यहाँ से 11 एंड यहाँ से 16। जीरो पूरी में गोल डेस्टिनेशन यहाँ पर 4 में हो जाएगा, 4 में हो गया। यहाँ से 2 अपना लग जाएंगे, यहाँ पर 10 अपना, 7 11 13 12 5 16 हो गया अपना, 6 यहाँ पे 5 जोड़े थे। सो इसको हम लोग आएंगे, हमें जाना फॉर एस टू बी, एस टू बी जाएंगे तब हम, तो अपना क्या आएगा, एफ एन इक्वल टू लगाएंगे, एफ एन इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 12 16 आ गया। फिर जाएंगे एस इक्वल टू सी जाएंगे, तो इसमें क्या आएगा, 3 प्लस 11, 3 प्लस 11 में डेस्टिनेशन एंड 3 प्लस 11 ये बना आ जाएगा 14, शॉर्टेज पर हो गया 14। देन स्टेप 2 में जाएंगे, एस सी से हम जाएंगे ई में, एस सी से जाएंगे हम लोग ई में, तो एस सी मान क्या था, एस सी मान था 3 एस और सी का 3 से 10, हाँ 3 से 10 एस सी प्लस 10 ई का मान कितना था 4, 17 आ गया। जाएंगे एस सी से डी में, एस सी रेंस टू डी, एस से मान 3 और 10 था, 3 और एस सी, एस और सी का मान था 3 जाएगा, तो 7 प्लस 6, सो ये हो गया 16, 16 आ गया। एंड बी एस बी से सीधे एफ में, एस का मान कितना था 3 और बी का मान था 12, 12 ही था, 5 था, 5 प्लस 11 तो ये हो जाएगा अपना 14 20। एंड एस बी से, एस बी से टाइम्स टू ई, क्या हो जाएगा अपना 4 प्लस 12 प्लस 4
फिर 20 फिर जाएंगे SCT टेंस टू ई, यहाँ लेंगे 3 + 7 + 12 + 4 इक्वल टू हो जाएगा ना 16। तो यहाँ में जाएंगे लिखेंगे SCDE टेंस टू जी में जाना जी में है ना, तो 3 + 7 + 2 + 5 इक्वल टू मिल जाएगा 17। आंसर इज 17। एंड हम लोग करेंगे व्हाट इज द हेरिस्टिक इन एआई। देखो हेरिस्टिक आर लाइक स्मार्ट गेसेस और शॉर्टकट्स दैट हेल्प करता है अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स मोर क्विकली, दे डोंट अलाउ करता है and guarantee the best solutions, but they help to us to get the good solutions without having try to even single possible possibilities. Why heuristics are useful? They go faster, easier, not perfect. What is the optimizations? क्या होता है ऑटोमेशन इज द प्रोसेस of making some things as a goal as the possible in the AI. This usually means finding the best solutions or a best way to go and some to go. Like this usually means finding the best solutions or best way to do something within the certain limits, times and source and or constant. Hill climbing hill climbing is like trying to reach the highest point on the hills. Imagine you are standing and somewhere on the hills on a on the top at reach step you look around and moving the highest point you can see your deep doing this until you can't find any higher spot. That's essentially how to hill climbing algorithm. Hill climbing is the simple algorithm होता है used to AI to solve the optimizations problems. It is a search algorithm that move step by step towards the goal, always choosing the next step that see to lead and health. How it's work. Start with the random start with the random random points. Pick a random points, start state on the then the start space. Evaluate the neighboring points, current points to look at the neighboring points. Evaluate करता each neighbors using the functions to the measures how cool it's choose करता है choose करता based neighbors and neighbors from the list of the neighboring points. Pick the one with the best evolution, then move the best neighborings, move for the selections based neighbors and make the your new current point. Repeat the process from the new points and evaluate करता है the neighborings and move towards the that's look the best. Start like hill climbing, but occasionally allow words move with the probabilities that decrease करता over the times that allow in capping local maxima and potentially finding the global maxima. Hmm. And इसमें क्या हुआ simulated annealings is the more advanced optimizations techniques captured होती है to the hill climbings है. Simulated annealings help करता find the best solutions to problems to
avoiding getting stacks. It's allow करता है possibilities of the accepting worst situations in the sorts teams. Sorts team start with initially solutions and high temperatures. Hmm. Also, to start at the random solutions, you begin with the random solutions to the problem. Evaluate करता solutions. You check how go the solutions and make small changes to the solutions to see if the improve decides whether they accept the new solutions. If the new solutions is better than accept, it's the if the new solutions is worse, you still might accept it's but with the probabilities. And slow cool down. Mm, slow cool down as the times pass. Cool downs the systems meanings you become less likely to accept over solutions. This help algorithms so focus on the refining the solutions instead of the evaluating new random path. Constant satisfaction problem. The constant satisfaction problem is the type of problems where we need to find the solutions that meet to certain conditions or rules. Mm, like common common applications of CSP. mm, scheduling. देखो assessing assessing बोलते हैं assessing the things like employees are room to time while ensuring there are no conflicts होता है. And planning organizing tasks or event in a certain orders often with the deadlines है. Reasoning क्या होता है reasoning allocations है. Is resource allocations distributing the resource and so that everything is used to efficiently. Efficiently and without exceeding say limits. Main components variables. These are the things we need to find the answers. Domain, this is the list of the possible values each variables can have. And constants, these are the rules that limits want to have variables can have. Uh, Unary constant, a rule about one variable's binary constant. A rule involve two variables. Higher orders constant, rule that involves three or more variables. Type of CSP like constant क्या बोलते हैं CSP वो कॉमन एप्लीकेशन नहीं. constant satisfaction problems. Binary CSP problem where each constants involve two variables. Clicks developing to talks. No binary CSP like problems where the constant involves more than two variables. Hard versus soft constant. देखो hard हार्ड में क्या होता है मस्ट ऑलवेज satisfies rules you cannot break है. सॉफ्ट में क्या होता है आर द फ्लेक्सिबल एंड कैन बी इन्वॉल्व to some extent. गेम प्लेइंग मिन मैक्स. हाँ मिन मैक्स में क्या होता है इट इज यूज इन गेम प्लेइंग. and the min max algorithm is the decisions making process used in the game playing especially for the two players games like chess and टिक टॉय गेम होता है housework housework. One player called Max is trying to maximize their the score or chance of winning. The other players called min is to trying to minimize the first player is the score to chance of winning. Step understand create the game three. Three imagine the game as the tree. क्या कर सकते हैं इसमें like creating a game tree. Imagine the game as a tree. Each node in the tree represent करता है the game states. The tree branch out to show all the possible move from the state.
move player turns, इसमें होता है कि player turns. If it is the max players turns, they will choose the move that lead करता the highest possible score. They want to maximize easier a chance of winning. है min player turns. If it is the min players turns, they will choose the move that lead the lowest possible score for the max player and evaluate the leaves. The game tree has many branches, but at the very end of the we calculate the scores. Calculate the score based on the outcome of the game. The leaf notes they us find the results on the games. इसमें क्या होता है कि हम ट्री बनाते हैं तो ये समझाएंगे ए बी सी डी ई एच. तो हम लोग करेंगे लाइक -1 4 2 6 6 3 -5 एंड 0 7. इसमें क्या होता है कि अल्फा बीटा pruning. Like pruning is the smart tricks used to make the minimax algorithms faster in the games, and instead of the checking every possible move, alpha beta prunings cut off the part of the game's tree that doesn't need to explore, saving times. Alpha क्या होता है? This is the best highest score the minimizing players can get so far. Beta क्या होता है? This is the best and lowest scores the minimizing players can get the so far. How its work works, like start with the alpha. Basically we start with the worst and best possible scores. For max turns, the look at the each possible moves, update the alpha to be the max value of the alpha and the current moves value. If alpha becomes greater than the equal to the beta, we stop checking the rest of the move. इसमें क्या होता है कि for the minimized turns, look at the each possible moves, update beta to be the minimax values of the beta and the current move values. If beta becomes less than or equal to the alpha, we stop checking the rest of the value. A से B, हाँ वही statistic Statistics game is the game where randomness is the involved, meaning that the outcome of the sums or actions is the not always predictable. Instead of the everything being fully statistics games is the games where randomness is involved, meaning the outcome of the some actions is not always predictable. Instead of the everything begin fully controlled by the players chance. Players A rules हैं partially observed games हैं. इसमें क्या करते हैं? Partially observed game is the games where the players cannot see everything. The orders words some informations in the hidden from the from this is the points opposite side of the fully observable games where the players know everything about the games. एंड अब स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड. इसमें क्या होता है? प्रपोजिशनल एंड एफओएल्स, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड इन्फ्लुएंस. इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. क्या ही कर सकते हैं भाई ब्रो.
एंड इसमें क्या करना है कि इसमें क्या ही टॉपिक्स थी वेल and इसमें propositional logics propositional logics also known as the sentimental logics deal with the simple statement or the propositions that can be either true or false. Mm, false. It doesn't go into the details about the internal structures of the statements, but rather focus on the true value of whole propositions. Basic concept होता है propositions is the statements हैं, that can be that can be either true or false है, like sky is blue true है, और false भी होता है, it's the raining true और false भी होता है, and logical concept uh, corporators हैं, इसमें क्या होता है, we use these to combine propositions in the more complex like one the most common ones like and में क्या करते हैं कि नीचे and the statement A and B is true if both A and B are true. क्या ही बोल रहे हैं, like it is a running running ants, it have umbrella, it's true only if both parts are true. और CV like और में क्या होता है, और में करते हैं ये होता है and और में करते हैं ऊपर को the statement A or B is true if either A or B true, both are true. क्या ही बोल रहे हो, it is the runnings or I is have the umbrella it's true it's true if the at least one of the conditions is true है, तो मैं कह रहा हूँ कि not the statement not A is the true if it's a false है, it is not raining है, implies क्या होता है, implies इसमें करते हैं कि डिनोट करते हैं एक तीर से, ठीक है, like the statement A implies B and means
that if is a true, then b must also be true होनी चाहिए, ठीक है, ये सही है। Like if it is the raining, then the ground is yet, well क्या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। नॉलेज, देखो रिप्रेजेंटेशंस, नॉलेज रिप्रेजेंट करता है इज फंडामेंटल्स, नॉलेज रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट इन एआई दैट डील विद हाउ वी स्टोर structures and manipulates knowledge in the form that computers can understand and the use of perform stocks. And the first order logics, also known as the product logics, it's more powerful and expressive, allow करता use to represent and reasons about relationships between objects, steer the properties and the entities in the words keep concept like object entities. The FOLs work talk about individuals, objects, or entities. These are things in the words that can be described or trained to the each others. फंक्शन क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट भी होती है, फंक्शन देखो। FOL अलाउ करता है यूज ऑफ फंक्शंस which which map objects and objects, others objects function can be used to describe more complex relationships. In the propositional logics, each statement is treated as the whole unit, and there no ability to break down the statement into the parts. In FOLs allow करता है regions about specific objects and their relationships हैं। जॉन इज द ह्यूमंस एंड जॉन इज द मॉर्टल्स, ठीक है। इसमें क्या हो गया, जॉन देखो ह्यूमंस जॉन है एंड मॉर्टल भी जॉन है, तो ह्यूमंस टेंस टू मॉर्टल है। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, द एफएलजी इंट्रोड्यूस करता है टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स हैं दैट अलाउ करता है यूज टू मेक स्टेटमेंट अबाउट ऑल ऑल ऑब्जेक्ट और सम ऑब्जेक्ट हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं, यूनिवर्सल यूनिवर्सल क्वांटिफायर ये होता है ऊपर को ई, इसका स्टेंस ये होता है। तो द मीन ऑफ फॉर आल्स द एक्सप्रेस एज द जनरलाइजेशंस ओवर द एंटायर डोमेन्स हैं, humans and mortals. For all x, if is the x humans, then the x is the mortals. एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स हैं, इसमें क्या होता है एक्सटेंशियल क्वांटिफायर में, एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स लाइक इसमें होता है the mean that exists is that indicates the existence of the at least one object that satisfies the given properties. For essentially quantifiers and to the coil and to the knots, like all boys like crickets, तो इसमें all cats are animals. There is syntax, syntax, semantics, and interest of syntax. So syntax is the structures or rules that governs how we can form the valid statement or express in the language. ठीक है, it's about the correct agreement and systems क्या मैं कर सकता हूँ भाई इसके लिए, systems no, syntax is the structures are rules that govern how we can form valid statement or express in a language. It's about correct arrangement or symbols and semantics. Semantics is the meanings of the statements or representations in the language. It's tell us what the symbolics and their arrangements
mean the real words, and help the understand what is the statements and interface. क्या होता है interface? the process होता है of the drawing like drawings and conclusions or making the new statements based on the knowledge you already have. It's about using the logically rules to derive new facts from the existing facts, put all together. The syntax में क्या होता है? The structures of the logical statements, and human acts, mortal acts is the systematically correct according to the rule of fall. The meaning of the VX humans and mortals is the humans are mortals. Interface होता है from the fact humans Jones is the humans we can infer mortal Jones. John is the mortals using the logical rules and no, knowledge based agents. And knowledge based agents is the AI systems that use knowledge to make the decisions and solve the problems. Hold on a minute. Used knowledge to make the decisions and solve problems. Storage knowledge का था. The agents has a knowledge base which is collections of the facts about the words. Reasoning क्या होती है? It's a use rule to reasons which the knowledge. Decision making का था. Based on the knowledge and reasoning the agents decide to do it. It can make the actions, answer questions and solving the problems. And Vampus word का Vampus words is the game. like Vampus words is the fun and classic problems in AI where the smart agents explore करता है the cave and the treasures which in avoiding dangers the agents uses. It's a knowledge knowledge to make the safe decisions and navigate the cave. इसमें मतलब क्या होता है कि एक वैम्पर, हाँ, एंड झाटू सके हैं. ऐसे इसमें क्या कुछ खोल नहीं इसमें देखो. ऐसे इसमें ये भूत है. इसमें क्या है? इसमें क्या है? ये भूत है. ये बी एस नहीं, बी पी अपना, ये अपना एस है, ये अपना बी है, ये ब्लैंक है. यहाँ पर अपना क्या है? एंड ये अपना बी हो गया. ये अपना कुछ ब्लैंक हो गया एंड ये अपना बी हो गया. इसे बोलते हैं वैम्पस. ये अपना वैम्पस हो गया. ये ट्रेजर्स हो गया. एंड ये एजेंट्स में हो गया. एंड ये ब्रीज हो गया. ठीक है. Imagine A4x4 grid. The agent start in the bottom left cons and face right. Its goal is to find the treasures and leave the caps safely without falling into the traps or getting eaten by the monster and called the vampires. भाई तब से मालूम मैं देख रहा हूँ. vampires. Pits क्या होता है? Pits, these are dangerous holes. Holes if we agents fall into the a pitch die. Vampires is scary monsters that kill करता है the agents of if they are either room near the vampires smell snaky है. Transitor goals, the agent's goal is to find the and grab the gold which is the sparkles and glitters when the agent is the smart rooms. And pitch का था एक clap, that's the pitch is the nearby
rooms stations a collapse that the campus it is the nearly rooms the agents must move the carefully to avoid करता है dangers find the gold and get the our safety how does it agent work perceptions that senselings the agents used the sensors and to notice things like breathings and sensations or the glitters understand interference thinkings the agents thinks logically to figure out the what the dangerous all the bridge means the puts the nearby rooms and the distance means the vampires nearby planning and deciding the agents make the plan to avoid the dangerous rooms and move towards safe and safe ones or the goods and actions doing the agents follow Cuthbert's plan by moving the turnings shootings and vampires are grabbing the gold है award भी मिलता है उनको punishment performance measurement है उसमें plus 10 points if agents come out with the gold है minus 1 points to agents every actions है minus 10 point if arrow is used है minus 20 points to agents died logically pro- logical programming using prolongs हैं what is the logic programming देखो logic programming is the very way to tell the computers uh, how to solve problems using fact and tools like giving the puzzles solve with the logical uh, prolong क्या होता है prolong is the special language for this and it's the super popular in AI because it's help computers think logically like a smart detective prolong क्या होता है knowledge plus reasoning engine fact think that are true logical relationships हैं questions ask the computers what is the power you don't write step by step codes you just declared relationships and let's prolongs figures it out used in the AI expert systems NLP है forwards and backward chaining in AI देखो forward chaining क्या करते हैं हम लोग ये forward chaining is the like this starting with what you know and working forwards to find answers you talks facts and rule apply करता है them step by steps and see what new things you can figure out and how's the work now start with the facts things you know you are true user use rules to combine facts and discover करता new facts keep going until the you find the answers and solve the problem data and goals backtracking chaining क्या होता है backwards chaining like it's like starting backwards is like starting with the questions or goals and working likes में क्या होता है forward में Hmm. If x is equal to 20 and y is equal to and then 50 and 50 ये कैसे आ गया backwards to see करता है if it is the true you begin with the what you want to prove and check if the fact and rule supports how it works data and goal start with the goals look for the rule that's could provide the goal है check करता है if the fact supports those rules working backward until the your confusions goal or not what are the resolutions is the singles mechanisms reasoning rule that lets computers combine करता two logical statement and produce करता new ones if you keep applying it you can inventive inevitably prove something is true or so a set of settlements in the innocent algorithms convert statement into the logical form first input is sentiment is converted into the standards formats called the cnf
conjunctive normals form and means we break down the complex statement into the simple parts connected by the and or combined close using the resolutions the core idea of the resolutions algorithms is the solutions rule which combine two close to produce करता है to produce repeat until you find the answer conditions contradictions होता है contradictions found करता है if the algo produce and the empty close it's mean the original sets of the statement is consistent even the cannot be true or true at the sometimes not contradictions if no pretty close is found after trying all combinations then the statement are consistent and can be coexistent. What is the ontology topology what is the ontology in AI the things of the ontology and ontologies as a very details dictionary plus map of the concept that are AI used to understand and domains. It's tell the AI what kind of things exist like pupils, cars and companies हैं. Like इसमें क्या करते हैं हम लोग पोल एंड सिनफ like x tends to स्टेटमेंट नहीं होगी explain how they are related like car drive skip the rule and properties all cars ontology reasonings once the ontology exists करती on it like AI can reasons with its AI logical engines that use the ontology to make the smart conclusions Hmm. In source the ontology the structures knowledge maps होता है ontologies build करता है maps engineering से ontology reasoning using the map to make the smart reductions unit form में पढ़ेंगे like introductions to uncertainty and probabilistics reasonings Bayes rules and Bayesian networks puzzles logicals puzzle logicals अरे बुआ बनाओ चाय भूख लगी यार देखो अनसर्टनली एंड probabilistic reasoning क्या होती है instantly refer to the situations where we don't have complete and perfect informations about the words and the AI may not know everything it needs to make the decisions or it might have incomplete or noisy data probabilistic reasoning is the way of dealings with this uncertainty instead of making decisions based on the exact fact AI systems used probabilistics to the estimate how like difference outcome are probabilistics are just numbers between 1 and 0 and 1 that's represent करता है ना linked hold of the event 0 means something definitely wa- wasn't happens and a probability of 1 means something definitely will happens बैंड रूल्स क्या होता है बैंड रूल base rules like base rules is the mathematically formula used to update our belief and knowledge based on new evidence in AI like it's used to make the better predictions or decisions when we have some uncertainty and new data comes in prior knowledge like this is what already know the belief before seeing
the new evidence. You might know that historically it's the rain 30% of the times you city during the seasons of your title likelihood. This is the probability uh, of seeing the new evidence if the hypothesis posterior probabilistics because this is the new updates probability often the considers the new evidence like p a b upon no p a b up is equal to p a b upon a into a b ठीक है b p a ठीक है देन हम लोग करेंगे ठीक हो जाएगा Bayesian network. Bayesian networks is the way to represent करता है uncertain information using the networks of the node cannot by the edges relationships and it's like to map that so how to informations are related with the goals of the predicting outcomes based on what you know and notes क्या था they are the variables or events like rain traffic traffic होता है traffic edge का था the arrow between nodes so the dependency between variables हैं conditional probability का था each node has a probability associated with the with its which tell you you how likely sometimes something's it's given what you know. Hmm. Examples weather trappings ran accident traffic. Hmm. Ran accident ran and incidents can both cause traffic probabilistics में क्या था ran depending on the rain plus accident plus change of traffic से देखो rain plus accident तो 90% traffic से rain but not accident 60% traffic से no rain but accident 7% traffic से no rain plus no accident only 10% traffic ठीक है means क्या था if you know it's the the raining the chance of traffic is the higher and both rain and accidents happen traffic is the almost certain ठीक है and what is the fuzzy logics is the system of reasonings used in the handling the uncertainties and impressions unlike traditional logics where things either true or false fuzzy logics allow करता है things to be partially true हैं. So instead of the just saying is that is hot or cooled we say it's a partially hot or partially cooled a room could be 0.8 hot. How does it work fuzzy logics fuzzy set क्या होता है instead of the defining exact value fuzzy logics to define range warms could mean and temp between the 20% and membership क्या होता है each value has a degree of belongings to the fuzzy sets and 25 centigrade might be 70% warms and 30% hots rule कहता है fuzzy like fuzzy logics used to if then rules if the temperatures is warm then turns off the fan at some speeds and diffusifications like once systems make decisions using the fuzzy values it's the convert them into the precise actions like settings the fan to exact speed neural networks is a computer systems inspired by the how human brains works and it's the uh, made of neurons and nodes that are connected to each others in a layer. Hmm. And each neurons tech करता है tech input does not does simple calculations and passes the results formulations ठीक है समझ में करेंगे
like mm, mm, इसे बोलते हैं इनपुट, इसे बोलते हैं आउटपुट। लाइक दिस इज इनपुट एंड इट्स आउटपुट। इसे बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। इसे बोलते हैं हिडन लेयर। And input layers take a raw data like click, image, text or numbers. Hidden layer क्या होती है? Do the main thinking, they find the patterns and relationships called hidden because we don't directly see them. And output क्या होता है? Output layer give the final answers. ये में क्या है? ब्रेन हो गया क्या? What is the perceptron? And a perceptron is the one of the simplest type of artificial neural networks. It was created in 1956 by the Frank Risenhalted and used for the binary classification, which means it help categorize data into the two groups, yes or not है। की फीचर्स क्या होता है? इनपुट फीचर्स, दे आर द पीसेस ऑफ द डाटा वी वांट टू क्लासीफाई। एंड वेट क्या होता है? ईच इनपुट फीचर्स गेट ए वेट दैट्स सो हाउ टू इम्पोर्टेंस इट्स हायर वेट्स मीन्स मैटर्स मोर है। समीशन क्या होता है? द परसेप्ट्रॉन कंबाइन करता है ऑल द वेट इनपुट इनटू ए सिंगल नंबर्स कॉल्ड द वेटेड सम्स। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? लाइक दिस इज द डिसीजन मेकिंग स्टेप। इट्स चेक इफ द वेट्स sum is higher than a certain values, if the perceptrons input and output otherwise zero and blast क्या होता है? Blast ही तो blast the help of perceptrons make the decisions even if all the inputs are zero. Learning algorithms, the perceptron learn करता by the adjacency its weights and blast it gets better than making the predictions over the times। ये हो गया। इसे बोलते हैं F इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई। ठीक है, यहाँ अपना क्या हो गया? एक्स वन लाइक डब्ल्यू वन, ये अपना हो गया एक्स टू डब्ल्यू टू, ये एक्स थ्री डब्ल्यू थ्री। ये लोग क्या? टाइप ऑफ परसेप्ट्रॉन। तो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। सिंगल मल्टी एंड और क्या होते हैं? हाँ, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन को दिस सिंपल वर्जन्स कैन ओनली सॉल्व प्रॉब्लम वेयर द डाटा कैन बी सेपरेटेड बाय द स्ट्रेंथ लाइन है। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में क्या होता है कि मोर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स विद द मल्टी लेयर्स और परसेप्ट्रॉन्स विच
कैन बी सॉल्व मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। बैक प्रोपोगेशन क्या होता है? बैक प्रोपोगेशंस, बैक बैक back propagation, a method used for the trains neural networks and helping them to get the better and making the predictions by the learning from their mistakes and artwork, guessing. Neural networks make the guess like um, mm, like it's a dog when the image is actually a cat. Errors